weekends for me are usually dedicated to shoot content. Like मुझे याद नहीं है लास्ट ऐसा कौन सा वीकेंड था जिसपे मैंने ऐसे प्रॉपर बिना कंटेंट शूट किए रेस्ट किया हो, या फिर मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर दे रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ. सो इट्स द वीकेंड एंड आई नीड टू शूट अ लॉट ऑफ content for YouTube and Instagram as well, but I wanted to switch on the camera and just talk about anything to everything. You know, I used to come across those reels जहाँ पर लोग ऐसे बात करते थे how difficult it is to start working after you come back from a trip, and I obviously used to relate to it. But जब आपकी ट्रिप बहुत लंबी सी होती है ना, like for 14 days or anything, the difficult part is actually to get back to your older routine, like gym consistent रहना, diet consistent करना, because vacation पे तो obviously I wasn't dieting or anything, but यहाँ आके you know वो cravings को control करना and then gym regular करते रहना, it's so tough. Obviously this shade of concealer doesn't match my skin tone because I'm super tan, and ये concealer मैंने trip के बाद अब निकाला है because I broke two of the most expensive things in my vanity. एक तो ये concealer and this face powder by Charlotte Tilbury. Girls, you know the pain, right? Just look at it. Obviously, I'm not going to throw it away जब तक मैं इसको पूरा use नहीं कर लेती हूँ. It's so funny how Indian men literally get triggered by a piece of clothing a woman is wearing on her body with her money. While I was on the trip, literally no one bothered to look or stare at me or make me uncomfortable. And that freedom is something I'll never get when I'm traveling in India. इसलिए my clothes when I'm traveling in India are really different from when I was in Bali or even in Vietnam. It was actually Gaurav who suggested me this thing that instead of traveling in India every other month or every 2 months, save up some money and travel internationally. Like 3 महीने के बाद go and have an international trip. The reason is not that he thinks कि कोई और country ज़्यादा safe है इंडिया से या ऐसा कुछ. However, the thing is about probability. The probability of me getting catcalled and harassed in India is much higher. Like अगर मैं 20+ states में travel करी हूँ तो हार्डली 3-4 स्टेट्स ऐसी होंगी जहां पर मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया गया है. एंड इफ देयर इज अ वे टू ट्रैवल समवेयर जहां पर 0.1% चांस भी है टू फील सेफ, आई एम गोइंग टू टेक इट. एंड येस आई नो नॉट ऑल मेन, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ. बट अगर तुम्हारे माइंड में किसी का ऐसा एक्सपीरियंस सुन के सबसे पहला ख्याल ये आता है कि तुम ये बताओगे कि अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, देन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हनी.